Assalamualaikum dear students. Today is our fifth lecture in which we will study about 4-digit numbers and their names. So please open your books, page number 8. Okay. Kindly mention today's date, and today is 22nd May on page 8. Okay. So dear students, in our previous lecture, I have told you about the placement of 4-digit values in ones, tens, hundred and thousand. And now in this lecture, we will write names for 4-digit numbers. Okay. So, 4-digit numbers and their names. In the following example, Sarah has written the names of 4-digit numbers. So you have given some examples in which the first one is 4824. Okay, तो ये आपके पास जो है नंबर है. अब उन्होंने इसका जो है आपको आगे नेम लिखकर दिया हुआ है. ठीक है. सो वी विल फॉलो द सेम रूल्स फॉर question number 1. In question number 1, we will follow the same rule. 4824. Okay. This is the name of this 4-digit number. Okay. And the rest of the parts is also the same like part 1. Okay. Now come towards the question number 1. Write the names of these numbers. Okay. So in part A you have given 6720. So this is not 6720. This is 6720. Okay. 6720. ठीक है. तो 6 आपको 1000 के नीचे नजर आ रहा है, 7 आपको 100 के नीचे, सेम एज इट इज आपको जो है 2 10s के नीचे और 0 1s के नीचे नजर आ रहा है. सो write the name for part A 6720. Okay. So I have written the name of 6720 part A. Okay, 6720. So I have written it. Please write it on your books too. Now part B is 5094. So it is 5094. ठीक है. 100 में आपको देखिए 0 गिवन है, that is why 100 will be 0. So 594 is given. Write the name for part B. So I have done it. Now part C is 3008. So in part B 100 is 0 and tens is also 0. So we will write just 3008. Okay. So I have done 3 parts for you. The rest of the parts is your homework. Okay. Now come towards page number 9. Mention date. Okay. Today's date. Okay. On page 9, question number 2 is write the number that matches each name. So here they are asking for names for the numbers. For the numbers and the names are given to you. ठीक है. Names are given to you and they are asking for the numbers. Okay. And in question number 1 they were asking for names and the numbers was given to you. ठीक है. यानी यहाँ आपको नंबर्स गिवन थे, आपने नेम्स लिखने थे. यहाँ अब आपको नेम्स गिवन है और आपने इनके नंबर्स लिखने हैं. ठीक है. सो पार्ट A is already solved for you. We will do part B. So part B is for 5604. ठीक है. So the number for this name will be 5000 and 600 and 4. So tens will be 0 in part B and the ones is 4. Okay.
सो 5604. ओके, तो टेंस आपको यहाँ नहीं गिवन ना, देखिए 66 नहीं गिवन, आपको 70 नहीं गिवन, इसलिए यहाँ पर हमारे पास टेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जस्ट आपको एक इंडिविजुअल नंबर गिवन है और वो इंडिविजुअल नंबर 4 है जिसको हम लिख चुके हैं. डेट इज़ वाई टेंस विल बी ज़ीरो इन पार्ट बी. नाउ पार्ट सी इज़ 9052. So in part C 100 will be 0. Okay, 9000, and now I will put 0 for 100. Okay, so here 100 is missing, so I will put 0 at the place of 100, and now I will write just 52. 52. Okay, it is very easy and simple topics. Okay, dear students, you can do it very easily. Now part D is 7120. So in this part nothing is missing, all the things are given to us. 7120 in 20, 0 will be written in ones and 2 will be written in tens. Okay, so 7120. Okay, 2 and 0. ठीक है. Now part E is 1111. So I will write 1 in 1000, 1 in 100, and then 11 in tens and ones. Okay, so the rest of the parts are in your homework. Okay, now dear students, question number 3 is also very simple and easy. Write these numbers in thousand, hundreds, thousands, hundreds, tens and ones. It is very easy because we will write just thousand, hundreds, tens and ones. Okay, देखिए जैसे ऊपर हम लोग लिखते थे 11, तो 11 में आपको अलग से नहीं कहा गया था कि 1 आप बताओ कि 1, देखिए जैसे 20 था तो आपको अलग से नहीं कहा गया था कि 2 बताएं क्या है और 0 बताएं कि क्या है, लेकिन यहाँ आपने बताना होगा, क्योंकि यहाँ आपको उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि आप बताओ कि यहाँ पर जो डिजिट्स आपको गिवन है इसमें कौन सा आपके पास जो है वो 1000 में आएगा, कौन सा 100 में आएगा, कौन सा टेंस में आएगा और कौन सा वंस में आएगा. सो पार्ट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड फॉर यू. नाउ वी विल डू पार्ट बी. इन पार्ट बी वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है. So do you know why I wrote these units on 6471? I mean to say why I wrote these units on these numbers. The reason is it will make for me easy to write ones, tens, 100, 1000. Okay. Now I can easily write 6000, 400, 7 tens and 1 1. Okay, तो अब मैं यहाँ पर नेम्स नहीं लिख रही हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग द डिजिट्स एंड विद देयर यूनिट्स. ओके, आई एम राइटिंग डिजिट्स विद देयर यूनिट्स. ओके, मैं जस्ट लिख रही हूँ 6400, 7 टेंस एंड 1 1. ठीक है. इसी तरह पार्ट सी अब हमारे पास है. देखिए
मैंने लिख दिया है इनके ऊपर यूनिट। अब ये मेरे लिए इजी होगा कि मैं इनको वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड में लिख दूँ, ठीक है। नाउ लुक एट टू पार्ट सी। आई हैव डन इट फॉर यू। 7,200 0 tens and 4 ones, tens was 0 in part C, so I have put 0 for tens, 4 for ones, 2 for 100 and 7 for 1000. Okay, now the rest of the parts is in your homework. Okay, now come toward page number 10. Kindly first of all mention date on page number 10. Okay, so dear students, now we have page number 10 and the name of our topic is 5-digit numbers and their names. It is just like previous two pages, the difference is just that now in this page we will discuss 5-digit numbers and their names. Okay, so Sarah has written the names of 5-digit numbers, and on previous page it was Sarah has written the names of 4-digit numbers. Okay, and now there is an addition of one other number, one extra number, and it will be 10,000. Okay, so there is some examples given to you. There are some examples given to you, and the first one is 61,234. Okay, so 61,234. Now this is not 6, this is 61. Okay, this is now 61. So that is why these numbers are called 5-digit numbers because of this 10,000. ओके, इस 10,000 की वजह से आपके पास अब ये 5-digit नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम 5-digit नंबर्स के नंबर नेम्स लिखेंगे, उन्हीं के फिर आगे चल के नेम्स लिखेंगे और बाकी सारा जिस तरह से हमने अभी प्रीवियस पेज पे किया, ठीक है। So the question number 1 is write the names of these numbers like we have done it on previous page for 4-digit numbers. Now on this page we will do it for 5-digit numbers. Okay, so part A is 45,234. Write the name for this number, okay, on your books. So let's start it. So I have done it for you. 45,234. Okay, this is the name for this number in part A. Okay, so dear students, I want to show you the difference in 5-digit numbers and 4-digit numbers. देखिए 5-digit नंबर्स में आपके पास 61 है यहाँ पर, ठीक है। अब चल के देखते हैं थोड़ी पिछली एग्जाम्पल को। यहाँ पे देखिए आपको जस्ट 4 गिवन था क्योंकि यहाँ पर 1000 था। अब आगे आपको 10,000 गिवन है। 10,000 में आपके पास इसी तरह से डिजिट्स आएंगे 65, 75। देखिए जैसे आपके पास वंस और टेंस में आ रहे हैं। मे भी किसी जगह पर आपके पास 0 भी हो तो वो फिर जस्ट आपके पास 1000 ही काउंट होगा, 10,000 नहीं होगा। जैसे अक्सर यहाँ पर भी हम कह देते हैं कि 10 हमारे पास 0 है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आप देखो 4 और 5-digit नंबर्स में। यहाँ 4, 5, 8, 3, 2, 1, 9, देन यहाँ पर 6, 5, 3, देन यहाँ पर हमारे पास था 5, 9, 7, 1, 8, 3, ठीक है। सो आप थोड़ा सा फ़र्क अपने जहन में रखें 4 और 5-digit नंबर्स के लिए, ठीक है। इट इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू 4 एंड 5-digit नंबर्स, ठीक है। क्योंकि ये 10,000 नहीं है, ये 1000 है और ये चल के यहाँ पर हमारे पास 10,000 हो जाते हैं। तो अब आप देखो 61, 78, 36, 90, 80, 21, ठीक है। सो अब ये आपके पास 10,000 है, दैट इज़ वाई इट इज़ 61, 78, 36, 90, 80, 21 and this is now 1000. This is not 10,000, this is just 1000 4-digit number. So that is why it is 4, 5, 8, 3, 2, 1, 9. Okay, now
In part B, there is 98,017, okay, because 100 is 0 in part B. So kindly write it with me, okay. 98,017 and 17. So part B is also done. Now C, D, E, F, G, H, I, J. These are very easy. Dear students, kindly do all the rest of the parts in your homework, okay. Now come towards the page number 11. First of all, mention date, okay. Okay, question number 2 is write the number that matches each name. So same question we have studied now in our previous page, okay. So the same question is part A is already done for you. Now we will do part B. In part B, 10,509. Now we will write name for this number. We will write number for this name given to us in part B. So the answer will be 10,509. So here tens will be 0 because in part B tens is not given to us, okay. In part C, 14,041. Now 100 is not given to us, so we will put 0 instead of at the place of 100, okay. At the place of 100 we will put 0, and the other units are given to us. So 14,000. Now I will put 0 at the place of 100, and now I will write 41, okay. Is it easy or not? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ. And it is very interesting, 7,206. As you can see, 7,206 is given. So it is showing to us that it is not 5-digit number, it is 4-digit number given to us, because it is not 70, it is 7, okay. So I will write 7,206, okay, because in tens I will put 0 because just 6 is given to me, okay. Now in part E, there is 36,715. So I will put 36,000 at the place of 10,000. 36,715. So now in this part we have given complete numbers for all the units, like 5 for ones, 1 for tens, 7 for 100, 6 for 1,000, and 3 for 10,000, okay. 36,715. So the rest of the parts is in your homework, okay. Now come towards the question number 3. In question number 3, write these number
the question is, write these numbers in 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. So same the question we have done on पेज नंबर 9. ठीक है, पेज नंबर 9 पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना ऐसा ही क्वेश्चन. सो यू हैव जस्ट राइट द नंबर्स इन 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस. अब आपने इन नंबर्स को इन यूनिट्स के साथ मेंशन करना है. ठीक है. नाउ पार्ट ए इज ऑलरेडी सॉल्व फॉर यू. इन पार्ट बी I will write 5, 10, 1,000. ठीक है. Now I will write 6,000, then I will write 0 at the place of 100 because 100 is not given to us. Now I will write 1 in 10 and 3 in ones. Okay. ठीक है. So part B is I have done for you. Part B. Now part C is 94,608. Okay, so in this part the tens is missing, so we will put 0 at the place of tens. Okay, 9, 10, 1,000. Why I am putting 10, 10, 10 with thousands? Because it is not 9, it is 9 tens. So 9 tens is equal to 90. Okay, 9 tens is equal to 90. That is why I am writing 9, 10, 1,000. ठीक है. And after that I write 4,000. Okay, 4,000. If we add 90 and 4, we get 94. And then 600, and then 0 tens, and then 8 ones. Okay, now in part D, 8, 10, 1,000, because just 80 is given to us, so I write 8 tens and 1,000 is missing because it is just 80, not 81, 82, 83. So I will put 0, 1,000. थाउजेंड्स. ओके, यहाँ पे देखिए एस भी आता है. ठीक है, यहाँ आप लोग एस भी पुट करो. ठीक है. एंड देन आई विल राइट 300. इट इज़ नॉट 100, इट इज़ हंड्रेड्स. ठीक है, यहाँ पर भी आप एस पुट करें. ठीक है. एंड देन आई विल राइट 1 tens and 9 ones. Okay, so the rest of the parts is in your homework. Okay, it is very easy, dear students. So we have completed our today's lecture. I hope
you have understood all the concepts and the numbers and their names, and how to write the numbers in ones, tens, 100,000, 10,000. So kindly take care of yourself. Allah Hafiz, and do all the homework neatly, okay, on your books. Thank you so much.